A very good morning to our honored guests, dignitaries, faculty members and our fellow students. I, Navya Virmani, and I, Krishna Khanna, on behalf of Jagannath International Management School, Vasant Kunj, feel extremely honored to welcome you all to our distinguished corporate leader lecture by JIMS, Vasant Kunj. Before getting on the board, let me brief you on IIC. Institutions Innovation Council IIC was established on 21st November 2018 at JIMS Vasant Kunj since inception of IICs by the Innovation Cell MIC as per the norms and directives of Ministry of Education, then Ministry of Human Resource Development MHRD. It is established to engage large number of faculty, students and staff in various innovation and entrepreneurship related activities such as hackathons, leadership talks, ideation workshops, seminar in IPR, entrepreneurship and other competitive events to enhance the innovation and entrepreneurship ecosystem in the institute. We are privileged to have with us our respected director, Dr. Ravi Kedhar, who is also the IIC president, a topper in BCom and Masters in English from the University of Jammu. Dr. Ravi Kedhar did his PhD from the Northeastern Hill University, Shillong. Dr. Dhar started his career as a lecturer in English at Northeastern Hill University, Nagaland campus, Medzifema. Thereafter, he went on to work as an assistant professor of English and associate professor of journalism in the Department of Journalism, Languages and Culture of Punjab Agriculture University, Ludhiana. He went on deputation to Ethiopian Civil Service College, now University, Addis Ababa, where he worked for over a year. Since June 2006, he has been working as a professor of Media and Communication Studies and the director of Jagannath International Management School, Vasant Kunj, of Guru Gobind Singh Indraprastha University, New Delhi. Dr. Dhar has been a member of a number of academic bodies in various universities, including his own, where he has been a member of the University Code and the Academic Council. A keen researcher, he has published and presented papers in the areas of modern English, novel communication policy, online communication, communication rights and child rights. He is the founder editor of Mass Communicator, an international journal of communication studies. He has also come out with 3 edited books, Indian Management, Theory and Practice, Media in this World and Perspectives on Thought Leadership. He has also published Orphans of the Storm, a novel, The Chant of Vitasta, a collection of poems, and 101 Thoughts to Light Up Your Path, a collection of mystical aphorisms. He has also launched a YouTube channel, The Mystic Mariner. He has traveled to Sweden, the Netherlands, Germany, Austria, Slovakia, Czech Republic, Hungary, Korea, Singapore, Malaysia and Thailand. He has a personal website, www.ravikedhar.in. We welcome you, sir, and would like to request you to say a few words to welcome our guest. Good afternoon, everyone. On behalf of our esteemed chairman, Dr. Amit Gupta, heads of departments, faculty, staff, and dear students, I would like to extend a very hearty welcome to our distinguished guest, Mr. Podar,
who is here to deliver the Distinguished Corporate Leader Lecture and to interact with all you students. I would also like to extend a very hearty welcome to all the corporate guests we have from Foxhogs Ventures USA. In particular, I would like to make a mention of Mr. Arun Harimowar. It is because of his facilitation that this meeting has been possible. To speak a little about this institution for the benefit of the knowledge of our distinguished guest and his team, Jagannath International Management School is a part of a group of institutions in which we have around 8 institutions of higher education located in Delhi NCR and also in Rajasthan and Haryana. We have 2 private universities as well. One private university is located in Jaipur by the name of Jagannath University, which was recently accredited by the National Assessment and Accreditation Council as an A-grade institution. Another university that we have is at Bahadurgarh in Haryana. That again is by the name of Jagannath University. But it is JIMS, J-I-M-S, the acronym by which the entire group is famous. It is a brand name, it is a buzzword for all these group institutions. So most often when you talk to any student or any employee of any one of these group institutions and you ask him where he or she is studying or working, he will or she will always refer to it as not as, because the name is pretty long, so they will often refer to it as JIMS. And that's the way that this institution is identified in popular perception and popular imagination as well. So JIMS is a brand name in Delhi. Our institution was, among all these institutions, ours is one of the youngest because ours was established in 2003, and in 2006 we began all the 3 programs that are running at this campus. And that was also, as I was mentioning to Mr. Podar, that was also the year in which I joined this institution as its director. Ever since, the institution has taken a number of quality initiatives like entering into collaborations with industry bodies, with other organizations, governmental, non-governmental. So a number of initiatives were taken, and also one important thing that we have at this campus is because our main preoccupation continues to be the imparting of education. So the focus is on teaching learning processes. And just as in the corporate sector, you would like to ensure the quality of the systems. So our way to ensure the quality of the systems is to ensure that the teaching learning processes that we adopt here at this institution keep abreast of the changes that are happening in the world around. And that's why we have integrated it with technology. So there's a lot of technological input into the processes, and most of the processes of education are driven by technology here. And there's a lot of emphasis equally on getting stakeholder feedback. And the monitoring of the quality systems is such that we do not believe any postmortems. We believe in-process quality monitoring. That is why we have, I think, the most stringent system of quality verification, because we have a system of weekly reports, monthly reports, semester 6 monthly reports, and annual reports. So that any deficiencies, shortages, shortcomings located on weekly, monthly, and half-yearly basis can be plugged, can be looked into immediately, and we do not have to later on regret
because then by the time we undertake an analysis, it would be too late. Initially, the focus in terms of the placement of the students was on getting them placed in industry, getting them jobs. But then, as the winds are changing, the economy is picking up, India is a happening place. I was at home at the Netherlands embassy, where the ambassador of Netherlands was addressing people, and he said that as the ambassador of Netherlands, it is his business to ensure that Netherlands gets a share in the pie in India. And he referred to the GDP growth that Indian economy has registered, and he was questioning his own countrymen that where do you have this kind of a growth in Europe or in America? It's only in India that you have such kind of growth rate in GDP. And if our industry gets to participate in this growth, in the Indian economy growth, then we can also get some share out of it. So that is the kind of thinking, that is the kind of perception, and that is why, and luckily for us, with the arrival of Modi government, there has been a massive infusion of funds and massive and a superhuman, I would say, scale of attention that is being paid to the infrastructure sector, and because infrastructure sector is the most important sector for an economy to take off, and equally on the manufacturing sector, because India was doing extremely well in services even otherwise. So this kind of an attention at the highest level of the government, where the highest echelons of the government are engaging with the industry, and no longer is business considered a pariah in government circles and viewed with suspicion. So it's a kind of a partnership between the government and the industry. And as a result of this, and as a part of it, embedded within this philosophy of ensuring that India becomes the third largest economy in the world, and the government also laid emphasis not just on jobs, but on Make in India and also entrepreneurship. And that is what we in JIMS have also laid emphasis on. Our management is geared to these realities, and our chairman is also an alumnus of SRCC and IIFT. So having been groomed in these business schools, so he is very cognizant of these realities, and that's why there has been a shift in focus from job placement to creation of jobs through launch of startups. So, but of course, it is easier said than done. And herein comes the significance of organizations like yours, sir. And because when we talk of launching startups and ensuring that those become sustainable, because sustainability of a venture is more important than just launching it, because many times people do get ideas, most people have ideas, but it is the implementation of the idea which is important, and then to sustain with that idea, because you will not get profits in the very first few years. You should have the stamina to hold on to your idea, to believe in your idea, and when you believe in your idea, definitely it will come to fruition. And herein comes an important element in this sustainability game is the financial part. So if there is somebody to back you up, if there is somebody to handhold you, to provide you the finances, and when you go to the banking sector, because the traditional financial sector is such that it will ask for too many, what I would say, prerequisites. And they will have a checklist of prerequisites. If you fulfill them, only then are you credit worthy. And if you are not credit worthy, you are going to be deprived of the stream of funds that your business is in dire need of. Herein comes the role of financial companies like
angel investors, venture capital organizations. So they become important because private equity I'll not touch, they come much later. So angel investors and venture capital. And we have today the privilege of having the best of brains with us, the best of the highest of the high among the venture capital organizations. We have Mr. Tarun Podar here. We have the privilege of hosting him today here. He is the managing director of this company. So it is indeed a privilege for our students and faculty, and in particular for those of you who have been bitten by this bug of launching a startup. So those of you who are onto this bandwagon of launching startups, I think it would be a great treat, and he has something very good also to offer to you. I will not mention the details. I'll leave it up to him because it would be better for you to listen to him and to get it from him directly. So with these words, and I thank you all, but before I close, once again, I extend a very hearty welcome to Mr. Tarun Podar for having consented to be here with us at so short a notice and to share his thoughts and his action plan for you from this podium, from this pedestal today here. Thank you. Thank you for your kind words, sir. That was indeed motivating and inspiring for all of us. Now, on behalf of JIMS Vasant Kunj, I welcome our guest, Mr. Tarun Kumar Podar. Mr. Tarun Kumar Podar did his masters from Stanford University and is a Delhi University graduate. Mr. Tarun Kumar serves Foxhawk Ventures Corp USA as a managing director and India head, one of the India-US venture funds started by successful entrepreneurs in enterprise technology and consumer internet. Foxhawk has been a pioneer of investing in global technology, fashion, lifestyle, education and agricultural products and businesses. He was also featured in 30 Under 30 and is recognized by Fortune India, Outlook and more. He has been a well-known personality in finance industry. Previously, he has served Apple Singapore, Aegis Limited and Sonata Software. Having a distinguished personality, he is also the author of 2 novels and a passionate chef. Now, I would like to call upon Akshata to present a token of appreciation to Mr. Tarun Kumar Podar. Thank you, Akshata. Sir, we would like you to enlighten us with your warm words. Hello everyone. First of all, thank you very much. The people who has taken this photograph here, starting from this, because in my whole life journey, इससे अच्छी photo मैंने सच में नहीं देखी है. Okay, being very honest, because whenever colleges are putting my pictures getting from Instagram, and this is leadership lecture, okay, but let's keep this interactive session, because college में lectures मुझे भी काफी बोर किया है, right? So let's not make that. Thank you very much, Mr. Thar, okay, for inviting me here and seeing very lovely faces here. People, starting from I have heard a lot many things. First of all, thank you very much, for the extra tarif of mine, by the way. Yeah, okay. And starting from, not from my journey, okay, because that will actually, that may bore you, let's start from the journey of venture capitalist in India. Okay, that's something more important for us. Okay,
because I was also student sitting in the crowd like you, okay, having a dream to have a startup, okay. Again, few words like that will actually bore you, okay. जब हम startups की बात करते हैं ना कि startups खड़ा करना है, तो ये ना आजकल बहुत common word हो चुका है, पहले ही mentality होती है, पता नहीं क्या बात करेगा नहीं करेगा, because everyone is talking that let's do a startup, in India, approx 12,000 startups are being registered every month, according to MCA report, okay, and more than 4,500 gets closed. वो wind up कर रहे हैं, okay. Reason behind is that the backup of money and the mentorship, okay. अब उससे भी पता है एक अच्छा खासा reason है हमारे इंडिया में, कि what actually we Indians are doing, अगर आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, कॉलेज खोल लो, है ना. स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, पापा को बोलो स्कूल खोल लेंगे. जॉब नहीं मिल रही है, कंपनी खोल लो, राइट. ये चल रहा है. Anyone just completing the BTech, okay, उसके बाद they just they just go for the startup, okay. बीटेक करने के बाद they are just going to a startup. आपको पता होगा 2-3 साल पहले एक ट्रेंड चल रहा था, बीटेक करने के बाद लोग वेबसाइट की कंपनी खोल लेते थे, राइट, ओके. एक वो दौर था. अब आजकल, और उसके बाद पता है मैंने दिल्ली में बहुत सारी जगहों पे लिखे देखे कि 2200 रुपए में वेबसाइट बनाए हैं, है ना, लिखा होता है, राइट. नाउ दैट वाज अ ग्रेट मार्केट, बिफोर दैट, people are doing very marvelous job, okay. At the same point of time, जब ये सारे bigger competitors just they came into the market, just creating the website and all, उसके बाद से पता है अच्छी कंपनियों से हमारा विश्वास उठ गया, राइट, कि वो भी वही करेंगे, वर्डप्रेस पे चिपकाएंगे वेबसाइट, राइट. उसके बाद आई एक ट्रेंड हमारा और चला, लोगों ने स्टार्ट किया छोटी सॉफ्टवेयर्स की कंपनियां एप्लीकेशन बना देंगे, ओके. तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज अभी जो भी हैं, उसके बाद क्या हुआ पता है, कोविड के टाइम पे आज वही सभी जितने भी लोग हैं जॉब कर रहे हैं आफ्टर दैट, ओके. So sustainability that Mr. Dhar told, that's really important, और कोई भी सामान अगर आप किसी चीज की कंपनी खोलते हो ना, तो उससे पहले आपको आई थिंक यू शुड हैव नॉलेज अबाउट इट, राइट, एल्स आपके एम्प्लॉय आपको बेच खाएंगे. दैट इज हैपनिंग, ओके. सो गोइंग फॉर एन स्टार्टअप, get an experience, that's really important for us, okay. Now talking about sustainability, that doesn't come with only money, okay. अगर वो पैसे startup that's not something only money. किसी ने have you guys heard about Stayzilla, एक कंपनी थी पहले, अभी उसका ऑनर जेल में है, yeah, and many other companies are there. You must be hearing about Cred, right? Do you know कि इंडिया के जितने भी फिल्म स्टार्स हैं सारे उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, कोई भी बचा नहीं है, राइट. सचिन भी कर रहा है, yeah, okay. And if you see the balance sheet, okay, still people are not able to recognize कि profit सच में आ रहा है, कब तक आएगा. Basically, many of the startups are burning money from VCs, okay. We have a great example of many companies, Oyo, still. Paytm has introduced a company, Paytm Mall, बंद हो चुकी है, right. Ola still in loss, Uber is still in loss, right. Now they are actually burning money from VCs. Still they are investing upon that kind of status. Why? Because there are two things, और पता है स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने का जो फिलहाल ट्रेंड चल रहा था, स्पेशली और चल रहा है, अगर आप किसी ऐसे कॉलेज से हो, आर यू फ्रॉम IIM और IIT, यू विल रेज फंड्स, ओके. housing.com का नाम सुना था आप लोगों ने, राइट. राहुल यादव फ्रॉम अल्बर्ट, दैट हैज बीन अ रिकॉर्ड कि उस बंदे ने 15 दिनों में 500 करोड़ रुपीस रेज किया था मार्केट से, ठीक है, और 16 डे उसके बोर्ड ने उसे फायर कर दिया. डू यू नो द रीजन? raising money is not important, managing money is really important. That guy maybe mature or some not, he didn't act mature with the investors like Alibaba and SoftBank, right?
somehow they have to go, so sustainability is really important for us. Okay. Second, इंडिया में पता है लेकिन आई हैव सीन कि सभी बेचने पे निकल चुके हैं, पता है एवरीवन इज गोइंग टू हैव एन स्टार्टअप, सब बिजनेस कर रहे हैं, तो खरीदेगा कौन? Right, we are just selling everything. Okay, then who will be buying things, right? So first of all, just go for shopping. Okay, that means just try to buy things. You will be seeing the reality कि कितने में आपको बिक रहा है और सामने वाला कैसे बेच रहा है, right? That's the most important part. Then you will be knowing कि जो सामान जितने में आपको मिला है उसका actual price कितना आ रहा है. अगर if you are knowing things, देखो I'll tell you कि मैं मारवाड़ी हूँ, ठीक है, और I better know प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, बिजनेस में 3 चीजें चलती है, ठीक है, पैसा, पैसे के अलावा बिजनेस नहीं चलता है, ठीक है. आप कितनी भी मोटिवेशन लाइन बोल लो, एंड मोटिवेशन कि लोग कहते हैं कि यार पैसा कुछ नहीं होता है, आपने सुना होगा मे भी, पैसा कुछ नहीं होता है, ध्यान लगाओ, ज्ञान लगाओ, once you are a millionaire, okay, then do that philosophy. Okay, then that suits what I believe. Okay, so giving these kind of philosophy is not worth once you're not a millionaire or maybe once you're not successful. Okay, so that's something everyone should do. Okay, and we should realize the value of money. Okay, even nowadays also we are seeing the changes. Even I was talking with Mr. Dhar, we were a country, the most illiterate one, I guess, even if you see 1947 or somewhere, right? And we are the 5th largest economy in the world today, right? This is the change, right? We were a country कि जहाँ पे लिटरेसी रेट में सिर्फ केरला का नाम लेते थे, हम किताबों में पढ़ते थे, right? कि केरला में ज्यादा लिटरेसी है, right? And we are the country जहाँ पे एक गोलगप्पे वाला पेटीएम यूज कर रहा है, right? So this is the change, right? And we have unicorns every week in India, right? So this is the change. So of course, we are in a progressive country, okay? And this is the time for all our Indians, okay? I left US to work in India, right? और don't आप लोग इस भ्रम में मत रहना कि मुझे देश सेवा करनी थी, ऐसा कुछ नहीं होता है, right? Many people कि many one they are coming from US, okay, and मैं बोल तो नहीं कर रहा ना, yeah, right. So many people come from other country, they're नहीं मुझे सब कुछ देश के लिए करना है, right? लोन लेकर किसी को दान देते देखा है? नहीं लेते, right? We should not do that, okay? I left US not to do something for the country, okay, but to do something for myself. Okay, and I believe that if you are doing anything, okay, then that must contribute to the society and the nation. That should be there. एक छोटा सा contribution तो बनता है देश के लिए, right? Because many are there who are working for us, even we don't know about them, right? अभी एक कल्चर चला था, आपको पता है, कोविड में हम सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को गालियां दे रहे थे, right? बहुत सारे न्यूज में आ रही थी कि अदानी ने ये किया, अंबानी को सारे टेंडर्स मिल रहे हैं, राइट? कभी आप लोगों ने तो खैर गौर किया होगा, नहीं होगा, आई डोंट नो अबाउट इट, राइट? लोगों ने ये गौर किया कि ये अडानीज, अंबानी जो जिंदल सी हैं, जिन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को बंद करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया था, रिमेम्बर? उन्होंने पूरी की पूरी स्टील फैक्ट्रीज बंद कर दी थी 15 दिन के लिए, मोर देन दैट, उन्होंने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया था, राइट? So in our life, once you help a person 100 times, okay, and if you fail to help them one time, okay, they'll always remember you for that you didn't help them first time, okay? और एक लाइन आप लोगों ने सुनी होगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, let's not go for that, okay? These all are stereotype line, okay, जो सब कुछ बोलते हैं, okay? कुछ तो लोग कहेंगे लोगों पे ध्यान मत दो, right? You know what, my philosophy is कि लोगों पे ध्यान उतने तक दो जितना तक आपका फायदा है, many of my friends they are telling why don't you join BJP, AAP and all, okay? I always say कि politics is called business, politics से बड़ा business कोई नहीं है, right? And I'm doing a hardcore business,
So I had to go for politics, right? So politics पे उतना ही जाएं जितना में आपका काम टेबल के नीचे से हो जाता है, right? Okay, so that's good for the businessman, right? Also, would like to tell you something about Foxhawk. That's really important because उन्हीं की वजह से मैं फिलहाल यहाँ पे हूँ. तो अगर वीडियो एक दो जाएगी बोर्ड मेंबर्स को तो बोलेंगे भाई कुछ ने बोला नहीं तुमने. Yeah. So like let me tell you Foxhawk. How I think before that you need to understand about the word Foxhawk. And seriously मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है. ठीक है. I think आप लोगों के पास माइक होनी चाहिए. I think that would be very interesting for us to interact. Guys, please. See, like मैं भी आप लोगों में से ही हूँ. ठीक है. So I mean, let's make something like live. Not something called lecture. Let's not make this that. Yeah. I'd love to hear from you guys. But not like stand-up comedian. Yeah, please. Any question? Starting from you. These are not as of now. It is completely intellectual. Thank you. So एक तो आप चश्मे से डरा रहे हो. Yeah. So let me tell you a bit about Foxhawk, how it started. Foxhawk. That words defines. और being very honest, ये Foxhawk जो नाम है मेरा बिल्कुल नहीं है. ठीक है, मैंने I didn't put this name as a company name. One of my friend is there, Prerna is there, so she came up overnight with this name. Okay, yeah. And how I joined Foxhawk, how it got started, I had worked with Boeing, Boeing Defense I worked, okay, then later on then I joined Apple, okay. Joining from Boeing to Apple, okay, I learned few things, okay. पैसे के पीछे बिल्कुल मत भागो, ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे भागो, सिर्फ पैसे के पीछे भागो. Yeah, that's really important, okay. So, I joined Apple, I left Boeing because I was getting a very higher salary from Apple, okay. I had joined Boeing after my MBA, okay. Now, Stanford की fee 53 लाख रुपीस थी, ठीक है. और MBA करने के बाद हर एक का एक ही सपना होता है, ठीक है, बैंक वालों के लोन चुकाओ. Yeah, that's really important, अब बोइंग में काम कर रहा था, बैंक वाले पीछे उतनी सैलरी नहीं आ रही थी, राइट. आई जॉइंड एप्पल टू पे द लोन्स स्पेशली, ओके. इन 2019 आई थिंक एप्पल डिडंट लाइक मी. उन्होंने क्या किया, एप्पल के iTunes की सर्विसेज बंद कर दी, ठीक है. तो टोटल 220 एम्प्लॉइज अप्रॉक्स थे, सिंगापुर से लेयर ऑफ हो गए, ठीक है. आई वाज आल्सो वन ऑफ देम, राइट. आफ्टर दैट आई जॉइंड Secure Capital, I mean world's biggest venture capital firm, okay. I was actually not in finance, being very honest. I had 30 out of 100 in mathematics in 10th. Yeah, okay. So always remember that, I mean, never judge a book by its cover. Sometimes story may surprise you, right? Okay. And the second, कि अगर आप 10th में 6 बार फेल होते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप IIT क्रैक नहीं कर सकते. That's all bullshit. Okay. And one more thing, कि एक खराब इंजीनियर बनने से अच्छा है एक अच्छे हिंदी के कवि बन जाओ. Okay, that is also very important for us. Okay. So I didn't join actually. I started Foxhawk. Okay, yeah. I was working with Secure Capital. That's the biggest one. Where I have recognized few things. Okay. जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स छोटे स्टार्टअप्स आते हैं, देखो प्रोसेस क्या होता है. एंड these VCs made us learn few things. कि अगर आपके पास एसेट नहीं है फिर भी आपके पास मिलियंस हो सकते हैं, राइट. Still now even or even earlier days, I mean we Indians have been following traditional banking system. Okay, पैसे चाहिए आपको 5 लाख रुपए बिजनेस के लिए, बैंक चाहिए 10 लाख का सामान गिरवी रखिए, फिर पैसे लेकर आइए. उस 5 लाख में से फिर आपके पास अप्रोक्स 4.5 लाख आएंगे, राइट. बिकॉज कुछ पैसे ब्रोकर के पास भी जाएंगे और कुछ पैसे मैनेजर के पास भी जाएंगे, जरूरी है उनके लिए, राइट. तो उसके बाद उस पे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे कीजिए आप 24%, 36% in the market, right? That's the traditional banking, right? Then when
Indians got started getting funded. If you remember, एक ना craze था like कि जब Paytm को fund किया गया था, Oyo को fund किया गया था, biggest VCs like SoftBank, Alibaba, they came into the market. Then we knew something like कि VC is a word. Still the VC is a traditional banking system, right? According to all our Indians, they are not actually approaching to them, right? Then we knew like कि we can have millions like if you have only in ideas. Okay. So उस time पे like when many of our Indians and many of startups they were pitching to Seco Capital, right? See, Seco Capital is a brand. That's not a smaller VC. Okay. उनकी demand पता है क्या है? Just get the projection done from EY or KPMG first. Okay. Now tell me, I mean, एक startup 2 BHK फ्लैट में अपना ऑफिस चला रहा है, right? उसने पिचिंग करी है. मतलब आपको लगता है कि 5 लाख रुपए EY को देगा अपने प्रोजेक्शन बनवाने के लिए? How this is possible, right? तो वहां से जितनी भी स्टार्टअप्स हैं वहां से उछटने स्टार्ट हो जाते हैं मैक्सिमम VCs में, और ये हो रहा है. Okay. Many of the startups, even I personally recognize, I personally shortlisted. Okay. I'm using this name because they know me, so they won't say me anything. Yeah. So they like somehow they got rejected because projection नहीं है, valuation की copy नहीं है, right? आप कहाँ से valuation मांग रहे हो उसकी? They are raising $5 million. You are asking for the valuation, I mean वो उसके पास 20,000 रुपए नहीं है कि गांव वाले CA को देगा पैसे. Right. So how you're expecting all these documents, right? So from there I got a motivation because देखो सारा जो ये फसाद है ना ये पैसे का है हमारी लाइफ में, ठीक है? कुछ कहीं भी जाओ पैसे, you need money for everywhere, right? So I mean and any product you are selling you need money, any product you are getting you need money. I thought why don't you sell money? Let's sell money. That's the biggest solution, right? Then I came India. March 7, 2020, that was the day. Okay. We started Foxhawk. Prerna just came overnight that let's Foxhawk, Foxhawk. So Foxhawk, I mean, that's the word like, converting uncertainty into certainty. That's the word, Foxhawk. We started it. Our first funding was for 3 lakhs rupees from my pocket. Okay, I did it. The company name was Indian Veranda. We got more than 5 to 10x returns we got. Okay, और वो कहते हैं like कि अगर आप आगे बढ़ो तो कारवा बनता चला जाता है, right? So then we started getting investors, we started funding people, right? Till now we have funded more than 65 companies in India in last 3 years. Okay, and I'll tell you the differences. पहले बताता हूँ what actually we have done. Okay, first year we had closed 96.43 crore. First year. Close to 100 CR, okay. Second year 235 CR, okay. And this year the balance sheet that has been released by ANI, okay. We have closed $104 million. The first quarter, not the per year. Okay, there are a few reasons. Okay, first we started funding to villages. Okay. Do you know what? We have more than 65,000 villages in the country. Okay, and approx we have a ratio more than I guess 5,000 जो किसान हैं suicide कर रहे हैं. Approx maybe 2-3 दिनों के अंदर, ठीक है? See the reason? Loans. Right? Okay. So I just found a solution that why don't you introduce VC for villages? Okay. जो हमारे गांव वाले बैंकिंग को सही से समझ नहीं पाते हैं, राइट? अगर उनको लोन लेने के लिए जाना है, दे आर नॉट गोइंग टू नेशनलाइज बैंक, दे गोइंग टू कोऑपरेटिव बैंक्स इन द विलेजेस, राइट? और लाला जी तो बैठे हुए हैं स्टैम्प पेपर पे साइन करा के पैसे देने के लिए गांव में, जो जमींदार वगैरह हैं, दे आर डूइंग दैट एक्चुअली, So we found a solution that why don't you provide investments to all these people, not the loans. Okay. Now we need to understand the difference between banker and investment bankers. Okay. Bankers, they are lending the money. Investor, they are investing the money. Right. Differences मैं आपको normal language में बताना चाहूँगा. Suppose that you are two friends, दो दोस्त हैं आप, right? आप दोनों ने मिलकर कंपनी में 50-50 रुपए लगाए हैं, ठीक है? कल को बिजनेस डूब गई तो आप एक दूसरे से तो पैसा नहीं मांगेंगे कि 50,000 रुपए मेरे को दे दो, राइट?
because you are being the partner for the business, right? लेकिन कल को अगर वो कंपनी 500 करोड़ की होती है तो आप दोनों का 50-50% होता है वो, राइट? लेकिन वही अगर आप दोनों ने मिलके एक किसी तीसरे दोस्त से पैसा लिया है, राइट, तो आप वो दोनों की जिम्मेदारी बनती है उस पैसे को रिटर्न करने के लिए, राइट? सो दैट इज कॉल्ड लेंडिंग एंड दिस इज इन्वेस्टमेंट, राइट? सो द VCs आर बीइंग द पार्टनर्स फॉर योर बिजनेस. अदरवाइज किसी स्टार्टअप के पास एसेट तो होता नहीं है. जस्ट गो इन एग्जाम्पल पेटीएम, फ्लिपकार्ट एंड ऑल, वेबसाइट के अलावा क्या था ये बताओ? Nothing. Just the valuation for the idea, right? Okay. But again, we need to understand that bankers are asking for a collateral. Of course, VCs are not asking for any collateral. No EMIs from VCs. There are EMIs from the bank. No interest rate from the VCs. They are having, right? And the most important part, you're not bound to repay the amount. मैंने आपको बताया कि आपके दोस्त ने इन्वेस्ट किया है आपकी कंपनी में, कल को बिजनेस डूब गई तो पैसा तो सामने वाले पे डूबा ना. तो इन्वेस्टर्स आर बीइंग द पार्ट फॉर योर प्रॉफिट एंड लॉस गोल्स, राइट? अब बताओ, गांव में किसान है, राइट? उनको हर एक सीजन में पैसा चाहिए, राइट? गेहूं का सीजन, धान का, हर एक सीजन में पैसा चाहिए उनको, राइट? जस्ट सी एन एग्जाम्पल, लाइक यू नो कि पैसा हमने दिया उनको, ठीक है, अब उनको रिटर्न करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, राइट? व्हाई? बिकॉज वी आर अर्निंग फ्रॉम द प्रॉफिट from them, you know. And you know what, like you know कि अगर कोई भी बंदा अगर बिजनेस कर रहा है ना, चाहे वो दुकान वाला हो चाहे कुछ भी हो, किसी भी CEO का दिमाग अगर पैसे जुटाने पे हो, ठीक है, कि ऑफिस वाले को इतना पैसा देना है, you know, चाय वाले को इतना पैसा देना है, तो उसका दिमाग बिजनेस पे नहीं होता, right? They are like you know somehow they're like you know कि हाँ पैसे जुटाने हैं मुझे, right? So our philosophy is very simple. Okay, let us arrange the money. You focus on your business, right? And you know, Meerut is the area. Meerut, okay. There were many microfinance companies. Okay, microfinance companies आपको पता होगा, maybe you know जो weekly payment लेती है, आपको पैसे देने के बाद 36% like you know they are charging as an interest rate. Okay, maximum 24%, right? And then you have to. That's a very like you know I mean bad situation in the country because of microfinances. Okay, weekly payment, monthly payment they are charging. Okay, at the same point of time, if they are coming to the Foxtrot branch, there's nothing that you have to pay. There's nothing that you have to lose. Why? Because we are being the partners for your company, right? So the change is that, okay, कि पहले इंडिया में क्या होता था कि बड़ी कंपनीज के बड़े पार्टनर्स हुआ करते थे, ठीक है? फॉक्सट्रॉट गांव वालों के बिजनेस पार्टनर्स बन रही है, right? So this is the difference what we are making, okay? And 4 days back we have filed the IPO. You know, I mean, we're going to be the listed company. Maybe in March we will be public, right? So in 3 years we have filed IPO for 630 crore रुपए का. We are raising from the market. So this is the change, right? And as I told you, like you know, I mean, if you want to make any change, or if you want to reach the top, you know, I mean. And in the top and change the rule, you know, simple like you know कि अगर आपको कोई rules change करने हैं ना तो don't blame for anything, okay? That is the top, change the rule, okay, and sit there, okay? Then like you know you will see you know the experience, okay, and you know पता है like you know कि life में खुद से करके खाने का कुछ मजा ही और होता है, you know, आप कुछ नहीं करते हो ना, I mean घर पे जाओ मम्मी के हाथ का खाना खाओ, ठीक है, और आप हॉस्टल में रहो खिचड़ी बनाओ और वो जली कटी, ठीक है, तो there's a different taste. You will analyze it. Okay. Once you do your first salary, okay, that's a different taste of that first salary. Okay. So I think that we should enjoy that taste. Okay. I mean, I'll not tell you like you know कि you being the youngsters मैं वो ज्ञान दूंगा, वो सब कुछ नहीं होता है. Just forget that. Like you know कि there are many people like you know कि they are coming going for the lectures. I'll be giving them motivations. No. Nothing like that. I'm also in my learning phase. Okay. I'm also learning a lot from you, from everyone, right? Because every day I interact with many people. Because we are funding to startups. You know, अब बहुत सारे टाइप के लोग आते हैं. एक वेबसाइट बनाई सिर्फ 5 million चाहिए. Yeah, they are coming. Okay. और किसी के पास अच्छे आइडियाज होते हैं, ठीक है, but they're not able to express that. Okay. So I think that like you know कि you should have your idea, okay, and you should value that.
That's really important. Okay. You know, I won't comment anything about the degree, okay, because I'm in a college. Okay. But do you know what, don't mind, degree is the piece of paper. Nowadays, okay, your skills are really important. Okay. Degree is just to certify your skills. That's certify. Okay. And in my company, once you go to the career portal, we simply deny degree is not required. No degree. You are 7th, you are 8th. Okay. Because see, you know, we are actually not following a stereotype, you know, these working culture in India. Because we are going to be, and we love to be the Indian company. Okay. You know, a reason behind it that, like, you know, finance business India में completely sentiment से जुड़ा है. Okay. Do you know what? इसके लिए हमें फॉक्सॉक हमने गांव में इंट्रोड्यूस नहीं किया, आपको पता है. हमने फॉक्सॉक फाइनेंस इंट्रोड्यूस किया. ओके. बिकॉज वहां पे कहने कि फॉक्सॉक बोलते लोगों को समझ से बाहर है. ओके. वहां पे आप नाम लिखो राम निवास फाइनेंस, है ना, तो वो उनको समझ आता है, राइट. उसके बाद पैसा, यू नो, दैट्स कंप्लीटली सेंटिमेंट बिजनेस. ओके. नाउ वी शुड, देखो बिजनेस में लाइक यू नो कि कभी कभी ना एथिक्स को ताक पे रखना पड़ता है. दिस इज आल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, इमोशंस और एथिक्स से बिजनेस नहीं चलता है, ठीक है. एंड नॉट समथिंग दैट गो बियॉन्ड द एथिक्स, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज सी ethics is really important for your personal development. Okay, that's something your personal, and you should have that. Okay, so what we use generally, like, you know, we not used, we utilized the sentiment in the country. Okay, how? हमने क्या किया? अब आपको पता है, like, you know, कि हमारे देश में ना एक आदत सी बन गई है, ठीक है. पैसा लेने के बाद भूल जाओ, है ना, right? We have a great example for more bankers are here, right? NPAs के जो रेट है इंडिया में वो काफी हाई है, ठीक है. And for any bankers, you know, NPAs are the biggest issues. Okay. कुछ ऐसे NPAs हैं जो कभी आ नहीं सकते देश में, right? Yeah, there are, नहीं, don't call Malaya. Yeah. Okay, and there are smaller NPAs. देखो NPAs हो क्यों रहे हैं, right? First of all, we need to find the reason. Okay, you know, अगर आपने किसी को 50,000 रुपए, suppose that कि just we just give 50,000 rupees to a customer. Okay, they're not going to repay the amount on time. Okay, the reason behind it that first in the due diligence process, right? कि how you give him the money. आपको पता है मुद्रा लोन. You must be knowing. Anyone knows मुद्रा लोन by the government? Right? That's a complete failure. The reason behind it that that's unsecured money. ओके, 5,000 आप लीजिए, मैनेजर आपको खुद बोलेगा भाई साहब 5 लाख आप लीजिए, मैनेजर खुद बोलेगा भाई साहब 1.5 लाख मुझे दो, पैसे आपको नहीं देने वाले. या दिस इज ओके, पैसे लेके चले जाइए, ठीक है. किसान क्रेडिट कार्ड सुना होगा, राइट? दैट्स आल्सो द कंप्लीट फेल्योर इन द मार्केट एंड इन द कंट्री. आई एम नॉट ब्लेमिंग द गवर्नमेंट. ओके, सी गवर्नमेंट का काम 3 है. पहला, आप आइडियाज देंगे उनके एडवाइजर. दूसरा, संसद में उसको पास करो. तीसरा, साइन करके भेज दो लोगों को, राइट? सो लेट्स नॉट ब्लेम द गवर्नमेंट. ओके, लेट्स ब्लेम टू अस. Either we are not aware to get it, right, or else we are not making aware to get them. So that's our role, that how we are utilizing that, right? Okay. So NPO was the biggest issue for us. So what we did, we simply categorized कि जितने भी loans मिलेंगे गांव में वो सारे सिर्फ फीमेल को मिलेंगे. But only female. Okay. The reason behind is that कि अगर हमारा एक EMI डिले हुआ, ठीक है, और अगर आपके घर पे बंदा चला गया, किसी लेडीज के नाम पे लोन है, गिरी, तो कुछ भी हो जाए आपका पैसा वापस आना है. This is happening in the country, right? Because see, like, you know, women take this as a right. Okay, especially if you go to the villages, right? So we have approx 0 to 0.1% maximum NPAs in the country. Okay, and not only me, I won't tell you, मैं वैसे शेखी बिल्कुल नहीं बगाड़ूंगा कि हमारी कंपनी का NPAs बहुत कम है. No, nothing like that. Okay, जितने भी आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है ना,
Utkarsh is our competitor. Utkarsh is small finance bank. Jana small finance bank is our competitor. You know, सबके NPAs rate काफी कम है, right? जितने भी small finance banks हैं, NPAs rate कम है, और जितने भी PSUs और government banks हैं, सबके NPAs काफी high हैं. Few reasons. First, पैसा हम कम देते हैं और टाइम हमारा बहुत कम होता है, right? 50,000 दिए तो 6 महीने में आपको रिटर्न करना है, ठीक है? तीसरा, आपको वीकली पेमेंट करनी है या क्वार्टरली मंथली करनी है या फिर 15 दिन पे पेमेंट करनी है, ठीक है? तीसरा, जितने भी हमारे रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो गांव के होते हैं, लोकल होते हैं वहां पे, ठीक है? या वो आपको फोन करके धमकाते नहीं कि आपकी फोटो लीक कर दूंगा, या सीरियसली, ठीक है? वो गांव में जाते हैं, और हमने क्या किया है, वहां के मुखिया और सरपंच से हमने टाइप किया हुआ है, ठीक है? I mean, that's easy for them. You know, we get money all money recovered. Okay, so I mean, they are the biggest revenue maker for us. Okay, currently we are operating more than 23 branches across India. Okay, almost are in villages. Okay, we are operating more than 40, you know, that customer service points. देखा होगा आप लोगों ने SBI के ग्राहक सेवा केंद्र वगैरह, right? Okay, corporate something like that. Okay. So I mean, the revenue what we have made, that $104 million, that our global revenue, and especially 85% is coming from India. Okay. So you know, I'm not telling कि मेरी कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा है, just forget that. ठीक है? किसी भी बैंक का बैलेंस शीट बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, ठीक है? उसको दिखाया जाता है. सही बता रहा हूँ मैं आपको, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ और सबकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? I'll tell you, मेरा मोटो just to tell you, like, you know, कि just see, okay, that कि हमारे देश में कितना पैसा है, okay, और उसको कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है और भी किया जा सकता है, right? Just we need to know the correct platform, right? Now see, we have a division for lending and we have a division for investment, okay? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आपने क्या किया, किसी को 5,000 रुपए दिए, ठीक है? मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंग टू RBI 12.5% आप ले सकते हो, और नहीं तो 24% आप ले लो, चलो, ठीक है? 5,000 आप ईयरली मैक्सिमम उसका आप रेवेन्यू मानोगे तो 1,300 से 1,400 रुपए आपका आएगा, ठीक है? और आपको पता है इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा आता है? मिनिमम 2x, दैट्स द मिनिमम, ठीक है? ग्रेट एग्जांपल, वी हैव Zomato has returned 700x returns to the investors, do you know? And the biggest investor has been that the founder of Hathaway, you know? No? Warren Buffett, the biggest investor. The Zomato has returned. Okay, so this is the investment game. Okay, now I'll tell you something that what I can offer you guys. That's really important for us. Okay, he didn't tell you. Okay, so you know, I'm actually right now we are rolling out incubation centers in the colleges. Okay, and अब आपने सुना होगा बहुत सारे incubation centers. अटल योजना का नाम सुना है आपने? Right, गवर्नमेंट की है संस्था. Right, वैसे हमारी सरकार ने दिया बहुत कुछ है ना, बस पहुंचा कुछ नहीं है. Yeah, seriously. Skills India. Right, इसके साथ साथ Startup India, right, Make in India, many things are there, right? कितने चीजें पहुंची आप लोगों के पास? No, right? Okay. So we are rolling out incubation centers in all the colleges. Okay, where, like, you know, we are looking for students who are actually looking to start their startups. Okay, just come to that incubation center. We have a certain limited amount, okay, for them per yearly, what we invest, okay, in your startup. Okay, you research about the product, okay, while in your college, okay, and once you come out from the college, okay, then launch it publicly in the market, okay. From that time, once you launch your company, right, then we will be owning certain equity from you, okay. So this is the plan, okay. While in your college, and of course I'll request Mr. Thar that, of course, I mean, he will grant you some time, of course, for your startups, and I think they might be doing use, right? So that's the plan, okay, where we are looking up. It's not something I'll be giving you millions, of course not. Yeah, I mean, the amount which will be beneficial and useful for the research about the product, okay, and which will be genuine, of course we'll be offering that,
in the incubation center, we are going to select minimum 10 students, right, from the incubation center who work about that 2-year startup, right? Yeah. मेरा क्या फायदा ये भी आप सोच रहे होंगे? Yeah. Equity is the biggest benefits for us. What I'll be getting from you. Then again, like एक क्वेश्चन और होगा कि 10 में से 10 स्टार्टअप तो सक्सेस नहीं होंगे, right? So like forget the term lending. You are into investment, right? छोटे अक्षरों में लिखा होता है, right? Investment is the subject to market risk. हर जगह लिखा होता है, right? So of course, if someone is investing upon you, that means we have to bear the profit and loss both, right? So that's how we have a process that you have to follow. Like if you're pitching your idea, then of course we have a set of verification process to analyze your idea, right? If your ideas are good, of course we can go for that. Okay, and this is what we are doing in India. Okay. मेरे पास फिलहाल तो ज़्यादा कुछ बच नहीं रहा है, आप लोगों के पास कुछ हो तो पूछिए. Or should I start? But again, I'll start boring you. That's fine. Yeah. Circulate the mic. Sir, Zomato is making loss. First word, please don't call me sir. बहुत hard सा लगता है, पता है. तरुण, please. Zomato is making loss as in the balance sheet, but you said that investors are getting 100x of returns. How is that possible? No, I didn't tell you that. Getting IPO के बाद उसकी लगी बड़ी है, बता रहा हूँ. Yeah, ठीक है ना? Yeah, IPO से पहले से ही था. Right, so they have given the returns. I am telling you the game of investment. Let's not focus about a company only, right? They have given the returns. Okay, return मिले तभी तो IPO लाने दिया ना, right? Otherwise तो IPO लाने नहीं देते. तो सब पे ही चल रहा है. पहले आप रिटर्न्स दिखाओ इन्वेस्टर्स को, पैसे को बंद करो, IPO लेके आओ, उसके बाद फिर 3 रुपए के शेयर्स मिल रहे हैं मार्केट में. ये ऐसे कब तक चलेगा? मतलब लॉस, बैलेंस शीट में बहुत सारा लॉस है और इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिल रहा है. See, first of all, I won't comment about Dipinder Goyal. Okay, yeah, because whatever he is doing really marvelous. अभी फिलहाल लेकिन आपको पता है, that's your please, yeah. You know what, like कि जितने भी बड़े-बड़े स्टार्टअप्स हैं, वो पता है क्या कर रहे हैं? एंजल इन्वेस्टर्स बन रहे हैं, right? ओयो के लॉसेज हो रहे हैं, ओयो ने एक VCs खोल दिए फिलहाल कि छोटे स्टार्टअप्स को फंड करेंगे जिससे उनको पैसा आएगा, ठीक है? तो Dipinder Goyal is one of our angel investor. तो कुछ उल्टा सुल्टा मत बोलना, फिर वो कुछ बोलेगा, yeah, ठीक है? So Dipinder is one of our angel investor, like and what he's doing now is he's investing in smaller startups, right? आपको पता है शादी.com डूबने वाली है, बता रहा हूँ आपको, शादी.com, right? ठीक है, अब डूबने वाली है, अनुपम को भी पता है, he is also one of our investor, उसको भी पता है. Now what he is doing? 80 to 83 कंपनीज होगी जिसमें उन्हें तो इन्वेस्ट कर चुके हो, right? Most of them Shark Tank, right? कल he just sent me a video. आपको याद है बचपन में ना वो बर्फ नहीं खाते थे अपन, बर्फ खाते थे ना, अरे इसको आइसक्रीम मत बोलो, that was a बर्फ, गोला खाते थे ना, और एक पॉलिथीन में आती थी वो, है ना? ठीक है, एक या अभी एक कंपनी ने, हाँ शायद आपको पता होगी भी, यू मिस मास्क, या राइट, या ओके. तो अभी कल उसने क्या किया है कि एक कंपनी आई है, बहुत सारे फ्लेवर्स लेकर आ रही है, कल उसने इन्वेस्ट कर दिया, ओके, या, और अब वो कितने में मिल रहा है? 80 रुपए में मिल रहा है वो, राइट? मतलब हम लोग 2 रुपए में खरीदते थे आगे से, 1 या 2 रुपए में, या 80 रुपीज का चल रहा है वो. आप उसके अनुपम के उस पे इंस्टाग्राम पे जाओगे, वो वीडियो भी डालें, ठीक है? So like the reason, so I'm coming to your point, like कि अभी जितनी भी कंपनीज हैं उनको पता है कि उनके मेन बिजनेस से लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है? That's the reason they are rotating their money, especially they are becoming angel investors, okay, to get the returns. See, देखो Zomato को ब्रांड बचाना है, right? उस Zomato की वजह से Dipinder Goyal को लोग जानते हैं, right? तो obviously they have to sustain in the market, right? Okay. अब एग्जाम्पल तो आपके पास ये भी है कि फेसबुक ने ले ऑफ किया, राइट? है ना? ट्विटर की हालत आपको सब पता है, राइट? टेस्ला इज आल्सो डूइंग समथिंग, पता नहीं लोग स्लीपिंग बैग में सो रहे हैं बाहर, या? तो people are doing, but again they have to sustain with the brand, so they are rolling out money to different industries to get the revenues, okay? And somehow like this is good, okay? Even individuals should also have a different source of revenue for a personal life, right?
That's all. Thank you. Yeah, you can pass on the mic. Somebody, better you can circulate all of it. Sir, as we have seen earlier, the dot-com boom. Sorry? Sir, in 2000, as we have seen the dot-com boom. Oh yeah. So, That's okay. That's okay. Relax. so this startup environment can also be a boom. Okay. So your point is that, like, startups, what they're doing, that can be a kind of trend, that can be a boom, something like that? Sir, the investment. Yes, Investment. wise. So everyone is opening the startup and every company is investing. अब तुम अपनी लैंग्वेज में बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? तो जैसे 2000 में जब स्टार्टअप बूम वो .com बूम हुआ था, जब सब कोई वेबसाइट बना रहे थे, और 2009 में 7 में सब इकोनॉमी रिसेशन आया था। तो इन्वेस्टमेंट वाला जो ये भी शायद कुछ ऐसा होगा। Yes, sir. हाँ बिल्कुल होगा ना, बता रहा हूँ आपको। बबल सर, बबल। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ। लिंक्डइन सब चलाते होंगे, राइट? लिंक्डइन के न्यूज फीड में जाके देखो तो आपको मैक्सिमम न्यूज पता है क्या आती है? दिस कंपनी हैज रेज्ड दिस मच फंड, इज इट राइट? सो लाइक मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने पैसे आ रहे हैं फिर भी डॉलर का प्राइस 82 रुपए क्यों हो रहा है हमेशा? हो रहा है ना? वी हैव सो मच मनी coming from different countries, still we have the price 82 maybe or 83 is coming up in the market for INR, right? Okay, you know what, आज पता है जिस कंपनी के पास भी पैसा है, ठीक है, वो पता है क्या कर रही है? फाइनेंस कंपनीज खोल रही है, ठीक है? अब एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने कुछ एप्लीकेशंस में भी यूज किया होगा इंस्टेंट मनी के लिए, शायद बताना मत, दैट्स ओके। मनी टैप, अर्ली सैलरी, कैशी सुना होगा मे भी, उसको छोड़ो, बहुत सारे ऐप बेस्ड एप्लीकेशन मनी सर्विसेज है जो आपको बोलते हैं कि इंस्टेंट मनी देती है आपको, राइट? आपने पैन कार्ड, आधार कार्ड डाला एंड दे इंस्टेंटली क्रेडिट मनी इन यू, राइट? आप जितनी भी कंपनीज जाके देखिए, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी कंपनीज है, ठीक है, उनके पास एप्लीकेशंस की जिम्मेदारी थी, उन्होंने एप्लीकेशन बनाई और किसी एनबीएफसी से टाई अप किया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से, किसी इन्वेस्टर से टाई अप किया, 10-15 इन्वेस्टर्स लेकर आ गए, एप्लीकेशन थ्रू पैसे रोल आउट कर रहे हैं और कुछ परसेंटेज दे रहे हैं एनबीएफसीज को, ठीक है? इन दीज पॉइंट, आई एम सॉरी, आई डिडंट गेट योर नेम। सर, आयुष। आयुष, नाइस नेम बाय द वे, बट दैट्स कॉमन ना। So mine I have double A. Oh, that's good. Cool. So जो ये आप बूम की बात करो इन्वेस्टमेंट की, पता है, that's you don't say that's a boom. Okay, that's going to be the trend. Okay, अभी पता है लेकिन कि किसी के पास अच्छा खासा पैसा होता है, इन्वेस्ट कर देता है, कुछ नहीं तो चलो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, यही कर रहे हैं, राइट? कुछ नहीं बिटकॉइन में कर दो, भले ही एक एक्सचेंज फिलहाल क्रैश हुआ है, राइट? सुना आप लोगों ने न्यूज? So these investment games are actually growing. Okay, many of the founders, many of company directors, they are investing in the companies. Okay, Ratan Tata, the biggest investor, angel investors in the country. Distilleries खरीदी है क्या? अच्छा हाँ, sorry, Reliance का उन्होंने शायद नहीं लिया था, thank you. Yeah, so चलो Distillery तो चलो ठीक है, they are established company. Okay, Mr. Raghu is the name, I guess. He is general manager. एक नहीं छोटा सा बच्चा, yeah, right. अभी he has started a startup for, yeah, right, okay, so yeah, right. So for old age people, he has started a startup. Not only that, cardeko.com सुना होगा आप लोगों ने, first investor Ratan Tata, right? So he's also investing in different countries, right? The reason behind is that, okay, investors are getting greater returns, right? किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले कोई भी इन्वेस्टर 2x की गारंटी लेके चलता है, राइट? अगर 5 लाख की जगह किसी को 10 लाख आ रहा है, ठीक है, पता है, और इन्वेस्टमेंट पता है, सही बताऊं तो ये ना एक स्टैंडर्ड वर्जन है लालाजी वाला, दिस इज द स्टैंडर्ड वर्जन। ओके, आपने अभी भी चल रहा है, गांव में दुकानों में 5,000 सुबह देते हैं, बोलते हैं शाम को 10,000 देना, होता है ऐसा, 2 दिन बाद 10,000 देना, राइट? सो इसको एक्चुअली लीगलाइज कर दिया गया है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? और पता है इंडिया में क्या होता है लीगलाइजेशन का जो एक ट्रेंड चल रहा है, इंडिया में गवर्नमेंट को किसी चीज से टैक्स आता है तो लीगल हो जाता है, तो पता है आईपीएल बैन था, लीगल है ना,
या क्रिप्टो बैन था, अभी 2-3 महीने पहले शायद एक आई है रूल जिसमें वो लीगल हो जाएगी. Why? Because government is getting a better tax returns from it. Yeah, again. There was a time when there were Hero Honda, right? Hero plus Honda. Okay. Tata plus Docomo. Maruti plus Suzuki. Yes. Okay. That means we had not 100% FDI in the country. That time. Okay. Now in the Modi government we have 100% FDI in the country. Right. Now any company can come here and can open 100% subsidy here. That's what Foxconn has also done. Yeah. अगर उस टाइम पे फॉक्सॉग आती तो हमें किसी इंडियन कंपनी से पहले टाइप करना पड़ता, उसके बाद फिर हम दोनों कंपनी का नाम यूज करते हैं. Right. So of course, this is going to be a great trend, and I think that this is, better for us. Okay. Because even you think, guys, if you're looking for, you have an idea only in your mind. Okay. Even you haven't registered a company that's not open for the public. Okay. Still you can get the money. So this is the power for the investment. Okay, but again, consequences, of course, for everyone, and everything we have. Okay, the way money, that startups are burning money from VCs. Okay, अब बताओ कि पेटीएम मॉल डूब गई, right? इतने पैसे इन्वेस्टर्स के डूबे, right? वो तो लॉस है ना, वो पैसा कहीं और भी यूटिलाइज किया जा सकता था, right? So I think that we should utilize VC's money in a different way, और नहीं हो रहा है तो कम से कम भाई उस पैसे को कहीं और लगा दो कि सामने वाले को रिटर्न दो. नहीं, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं भोगी हूँ, सही बता रहा हूँ, ठीक है. आई हैव रियलाइज्ड in 2021 we had invested, एक्चुअली पता है कि हम लोग कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ VCs है. हम ढाबा वगैरह को भी इन्वेस्ट करते थे. एक राम ढाबा करके है नजफगढ़ में, ठीक है, तो हमने उनमें इन्वेस्ट किया, ठीक है. कंपनी प्रोप्राइटरशिप थी, ठीक है. बाद में पता चला कि ना ही वो ढाबा है ना ही ओनर वहां पे है, ठीक है. अब प्रॉब्लम इज दैट वी आर नॉट द बैंकर, ठीक है. हम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले लिखा होता है क्लाउज में कि वी आर बियरिंग योर प्रॉफिट एंड लॉस बोथ, राइट. सो इफ sustainable money should be used, okay, to sustain the businesses, okay, then I think हमारा भी कुछ भला होगा, right. फिर फॉक्सॉग में भी शायद 5 सालों में फॉक्सॉग बैंक भी लिख सकेंगे सामने, right. So this is what I hope I was able to answer you. Yeah, thank you very much. Anyone? Oh, cool. Sir, first of all, I would like to know more about your business. Okay. You said that you are an investor. So, sir, you invest in a firm, and if you lose that money, you don't ask from them for the money. But at the same time, you said we even lend the money. So you work both the ways. You even lend the money, and at the same time, you even invest. Thank you very much. First of all, nice t-shirt you have. Thank you. And let me answer your question. Lending is a different part and investment is different. Okay. We have 2 segments, I told you. I might not. Foxconn Ventures Corp is a company who is into investment. Okay. And in March, we have acquired RBI license for lending in March 2022. Right. So, Foxconn Ventures India Private Limited. Okay. That's the Indian subsidiary who are actually into lending. Okay. Now again, we are not nationalized banker, so we have certain limitations from RBI. We can lend up to 75,000 rupees only to the people, right? That's the reason we are giving all these money to rediwala, small shopkeepers, at a very lowest interest rate. Okay, so that's 2 separate divisions. Okay, what we are doing. Okay, now your most important question: what your company does, right? So let's cut the word company. Okay, let's call it investment bank or bank. What it does. Okay, we are a purely investment banker. Just like JP Morgan, you can say Goldman, you can say, so just like that. Okay, we are a pure investment banker, right? I mean, we are investing into startups. Okay, now again, let me tell you how investment. Okay, I give an example, but again, I'll tell you, investment is something that you are putting money, okay, at your own risk, okay, when you are knowing that the result is coming up from that person, then only we invest. Okay, एक बार बताओ,
रेस में कैसे घोड़ों पे पैसा लगाया जाता है, हमें पता होता है शायद वो जीतने वाला है, right? That's investment. What we do, right? So this is the investment game. Sir, I have one more question. तुम बैठ जाओ पहले. Yeah. Sir, actually, like as we all see that there are many banks. Of course. Yeah. But sir, why should a person take a loan from your firm? You said because people don't have the awareness in the villages. That is completely fine if someone has awareness. So is it that you have less interest rates than the banks? Because whenever we heard, whenever we talk to our parents, they say that if, for example, we take a land, we take a loan, we have to pay double the amount. So that is the concept where our parents do not even, they don't like taking loans. And is it your, you provide the loans at a very cheap rate or interest rates are less, so people even going for a formal bank, they go for your firms, they take loans from your firms? Thank you. See, again I'm telling you that we do not provide loans in that area especially. Not loan, no loans. Let's not use loan word actually. Then Loan is not there, investment, right? Yeah. Now again वो क्यों आएंगे? आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं. आपको चाहिए 10,000 रुपीज, ठीक है? ओके, आप 10,000 के लिए आप बैंक में जाइए और 10,000 के लिए किसी वीसी के ब्रांच में जाइए. उसी 10,000 के लिए आप प्रोसेस देखिए. फर्स्ट योर KYC इज रियली इंपॉर्टेंट. ओके, सेकंड योर सिविल इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम. ओके, थर्ड कोलेटरल is important for them, right? Then interest rate, of course. Then the principal amount should be returned in EMIs, right? And the last one, you have to return the principal amount anyhow, else your asset will be attached and the money will be recovered from there, right? This is the banking procedure, right? For the same 10,000 rupees, you go to any Foxhog or maybe any VC branch. Okay, first, no KYC instantly. Okay, simply they ask your pitch deck. सुना होगा आप लोगों ने, right? Just tell about the businesses, business ideas. Okay. Second, you get the money. Okay. Third, no collateral. Most important, no collateral. Okay. You don't have to return money in EMIs. I'll tell you why all this thing. I'm just telling the factors first of all. No EMIs, no interest rate, right? No collateral, and you are not bound to return the money. आपने पैसे ले लिए, भूल जाइए आप उसको. ठीक है? Question is how, right? Is it? I think you're not able to understand things, right? Sir, actually, I'm unable to. Hello. Sir, actually, I'm unable to understand your business model. How do you guys make money? How do I? Yeah, the entire See, so this is what I'm telling you. कि अगर हमने 10,000 रुपए आपको दिए हैं, right? तो in that, against that, we do two things. First, either we share in your profit, okay, else you have to give your equity. जब हम कंपनी रजिस्टर कराते हैं, ठीक है, तो हर एक शेयर्स का एक प्राइस होता है, इक्विटी का प्राइस होता है, ठीक है. दैट मीन्स कि अगर आपने 50,000 रुपीज मेरे से रेज किया है ना, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके जो शेयर्स हैं, हो सकता है कि आपके 5 या 10% शेयर्स की कीमत 50,000 रुपए हो सकती है, राइट? तो वो जो 5 या 10% इक्विटी है, वो आप मुझे कुछ टाइम पीरियड के लिए हमारे पास वो कोलैटरल रखते हो, गिरवी रखते हो आप, समझे? और उसके बाद उस टाइम पीरियड के बाद हम उसी शेयर्स को बेच देते हैं, इक्विटी को बेच देते हैं, राइट? नाउ सी, हमने 50,000 रुपीज आपके पास लगाए, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी राइज तो करेगी ना 5 सालों में, या राइज करेगी, फॉल होगी कंपनी, राइट? तो अगर अच्छे से राइज करी है कंपनी ने, राइट, तो एक जो 50,000 मैंने आपके अकाउंट में लगाए हैं आपके पास, वो हो सकता है कि मेरा हो सकता है कि 1 करोड़ भी हो सकता है 5 साल में, राइट? और ये भी हो सकता है कि 5 रुपए भी हो जाए. तो प्रॉफिट होगा तो भी हमारा है, लॉस होगा तो भी हमारा है. सो दिस इज हाउ इक्विटी इन्वेस्टमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर वे. दिस इज द रूल. ओके, तो जो बैंक के पास है, आपने क्या रखा है? एक फिजिकल कोलैटरल रखा है, राइट? यहां पे आपने क्या रखा है कि इंटेलेक्चुअल कोलैटरल रखा है उनके लिए, समझे? दैट मींस कि वहां पे आपकी इक्विटी की वैल्यू लगाई जाती है कि आपकी कंपनी का नेटवर्थ क्या है. सिंपल सी बात है कि आपने 10 ग्राम सोना आज खरीदा 40,000 रुपए, ठीक है, 5 साल बाद उसको आप बेच रहे हो, ठीक है. अब 5 सालों में उसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, आपको वही मिलेगा. अब बढ़ी होगी या घटी होगी तो आपका है, राइट? सो दिस इज हाउ दिस इक्विटी मॉडल वर्क्स, समझ गए? इसीलिए जितनी भी कंपनीज हैं
वो इतने सारे पैसे, आपको पता है लेकिन कि आपने कभी ये देखा है लेकिन कि दिस कंपनी हैज गॉट दिस मच लोन एक्सेप्ट अडानीज, राइट? अडानीज अंबानी के ये न्यूज आती है लेकिन कि इस कंपनी ने 2 मिलियन 3 मिलियन का लोन लिया हुआ है, राइट? मैक्सिमम न्यूज आपके पास क्या आती है? दिस कंपनी हैज रेज्ड दिस मच फंड, नॉट रेज्ड लोन, राइट? बिकॉज इतने सारे लोन लेने के लिए आपके पास इतना कोलेटरल तो है नहीं अडानीज और अंबानी के जैसे, राइट? तो इसलिए वहां पे आपकी इक्विटी की वैल्यू लगाई जाती है, समझे? आपके आइडियाज की लगाई जाती है वहां पे, ठीक है? अब इसकी वैल्यूएशन कौन करता है? इसका एक रूल होता है जो सीए करता है। आपके सारे आइडियाज, आपकी कंपनी का नेटवर्थ, आपका नेटवर्थ, राइट? तो उसके हिसाब से क्या होता है कि वी प्रोवाइड मनी टू देम, राइट? क्लियर? थैंक यू। एनीवन एल्स? हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे, आप मुझसे सजेशन मत लो, आप पूछ सकते हो। Yeah? Anyone? No? Anyone else has any question? Please come up quickly. Yeah. जबरदस्ती नहीं पूछना है, हाँ? Yeah. Sir, is it just like gambling? No, you have a good question. You know, just tell me the basics of gambling. Sir, risk होता है बस. Sorry? Risk होता है उसमें भी. Of course. See, investment is all about risk. Okay. So, like, you know, it is actually like, you know, कि it's not the gambling. I'll tell you how. Okay. Gambling में आपके पास क्या, आप collateral क्या देते हो ये बताओ आप. Gambling में क्या होता है like, you know, कि आपने अपने रिस्क पे पैसा लगाया, ठीक है? आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, राइट? अब वो आपके भाग्य पे डिपेंड कर रहा है। सर सिक्योरिटी तो सर इसमें भी नहीं. किसमें है ना सिक्योरिटी? सर क्या है? आपकी कंपनी की जो इक्विटी है वो तो सिक्योरिटी है ना? तो सर अगर वो वैल्यू ही कम हो गई उसकी तो कंपनी किसकी वैल्यू? देखिए क्या होता है लेकिन कि अब अगेन व्हाई एंड if suppose that like, you know, कि losses होते हैं, right? So like, you know, कि that is how RBI has defined 13 rounds of verification due diligence process, okay, before investing into any company, okay? And even to invest and to do any FDI, RBI and SEBI approval is required, okay? So like, you know, they actually check the exact like, you know, net worth for the company, product evaluation, and that investment advisors are there, you know, who actually analyze like, you know, कि 4 से 5 सालों में business का क्या होगा, you know, so that is predictable, okay? This is what like, you know, that investment games are working, okay? And of course like, you know, कि you know, you said about gambling like, you know, कि you can relate it, being very honest, you can relate it, okay? सर मैं रिलेट थोड़ा Yeah, you can relate it, okay? But this has been a legal business by RBI, okay? Why it has been launched like, you know, because पहले क्या होता था like, these VCs game were only in US, especially like, you know, where Facebook and other companies were raising the funds, right? Then like, you know, in India, when we saw, okay, that there are few industries up there, fintech, that are growing, edtech, they are growing, right? You know? So if anything like, you know, basically earlier back, banking institutions were only funding for the present and past, right? Now banking institutions are funding to the future, right? This is what VCs are doing. VC कभी भी आपके सिविल को चेक नहीं करती है, VC कभी भी आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगती है, right? Because they are not asking anything about your past and present. They see your future, right? So investment upon your future, okay? This you can say about a VC. Thank you, sir. Thank you. Anyone else? Why you guys are hesitated? मैंने पता है कल परसों एक वीडियो देखी थी जिम्स की, being very honest, you know, आप लोग काफी नाच कूद रहे थे, हाँ, yeah, and you guys are so silent here. Any question? Okay, might be बोर भी हो रहे होंगे, घर भी जाना हो, please. Like you said, you invest on the farmers also, right? Yes. So farmers' main business, what they are doing, their agriculture, growing their agriculture product. But there, certain things are beyond their control. Like That depends upon the climate, environment. You're talking about that, right? So if the chances are 50-50. See, then again, that's what we analyze. You know, the rounds of verification. Okay, there are few things that we never entertain or don't invest. Like we are not investing in leather business. We are not investing in liquor business. Okay,
RBI has a ban to invest in microfinances. Okay, you can't invest in uranium, gas, natural gases, oils. Investments are not applicable. Talking about your question, like that uncertainty about the businesses there, like this is what we analyze, like ki, suppose that like ki we also see about that. That's how we have a local verification team, right? We analyze the land, we analyze, and not only that, हमने क्या किया है कि ग्राम जो सचिव होते हैं पंचायत में, हमने उनसे टाइप किया हुआ है, right? जो हमें इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है आपके सरपंच और मुखिया से गांव में, ठीक है? और जो हमें एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलती है लैंड की, मिलती है ग्राम सचिव से, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, हर एक लैंड्स को उसने ऑनलाइन डाल दिया हुआ है, ठीक है? सो वी गेट द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर, राइट? सो somehow like we see, you can't say like that this is 100% secure, of course not. Okay, अगर 100% secure होता तो फिर मैं lending करता, right? So this is investment, you have to take risk. Okay, and we are taking. अब क्या होता है like कि एक कंपनी से प्रॉफिट नहीं हुआ तो दूसरी कंपनी से मैनेज हो रहा है. This is what business works, right? So this is what the VCs are doing. Okay, many VCs are there, पैसे बर्न हो रहे हैं, still they are expecting कि चलो भाई क्रेडिट का भी तो पैसे देगा, So this is how it works. Okay, it's all about like that how strong the due diligence process is there. अब ऐसे में तो लोन का भी due diligence process होता है, right? फिर भी पैसे नहीं आते हैं, right? Yep. Thank you. Guys, any other question? Yeah. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो काफी देर से, but you're not asking. Yeah. Sir, same question. Oh, thank you. Yeah, anyone guys? So should I go with that formal thank you note, right? Is it? One thing I would like to ask for the student. Yeah. That is you want to invest in the ideas of the student. Right. So how will be the process? So there are many ways. Okay. Incubation center, ठीक है, जिसमें बिल्कुल टाइम लगने वाला है, ठीक है? तो there is a simple process. Go to any of your nearest Foxhall branch. Okay. Pitch the idea. Okay. And get funded. Second, go to our website. There is an option to submit your pitch deck. Submit the pitch deck. We analyze. You'll get a call from us for a meeting. Okay. Come to our head office, DLF Center in India. Right. So we have a very bad coffee. Enjoy that. Okay. Yeah. And our manager will be telling you that I mean how bad your business is. The idea is very initial stage, not. See, मैडम इनिशियल स्टेज कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जब आपके दिमाग में आइडिया है, ठीक है, तो लेकिन कि आपको पता है, देखो लेकिन कि इंडियन साइकोलॉजी, लेकिन हमारे दिमाग में कोई चीजें तभी आती है, ठीक है, जब एटलीस्ट उससे पहले हमारे साथ कुछ घटना होती है, होता है, ठीक है? तो इनिशियल इज नथिंग, ठीक है? आपके दिमाग में आइडिया है, दैट मीन्स कि आपका दिमाग कह रहा है कि इसको करना चाहिए, राइट? तो अगर वो ख्याल आपके दिमाग में आए तो आप हमारे पास आइए. जस्ट डोंट गो टू एनी साइकोलॉजिस्ट. Yeah. Okay. Anything you have an idea? Okay. Second, dial 1800-103-9585. Okay. Talk to them. Tell your ideas. Okay. SMS 92205 Okay. They will respond to you. I'll tell you. Okay. 92205. Yeah. Okay. Now I'll tell you. You guys are educated. तो मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ? आपको पता है हमारे जो देश है उसमें गांव में आपको पता है इंटरनेट भी कभी कभी वर्क नहीं करता है, ठीक है? उन सब के लिए हमने ये सर्विस निकाली है, ठीक है? आप नंबर डालिए, आपके पास कीपैड फोन है, वहां से भी आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है? सो वी आर ऑपरेटिंग ब्रांचेस, ऑनलाइन सर्विसेज, ऑफलाइन सर्विसेज, राइट? पिच योर आइडिया. ओके. अगर आप 50 लाख की डिमांड कर रहे हो, 10 लाख तो मिल ही सकते हैं. सी लाइक what every 100 miles of distance always starts from your first step. Okay, so take this step. Okay, and let's not fear like कि कल क्या होगा, वो तो आपको नहीं पता है कल एक्सीडेंट होने वाला है. Yeah, we don't know that, right? So let's not think कि like कि बिजनेस मेरा कल डूब जाएगा. पता है ये जो डर होता है ना, ठीक है, ये आपको कुछ करने नहीं देता है. पता है, एक स्टोरी आपको बताता हूँ मैं, ज्यादा टाइम तो नहीं रहा हूँ.
बोर कर रहा हूँ गाइस? सो MBA में मैंने लोन लिया था, कैनरा बैंक में लोन दिया था मुझे, ठीक है, और स्वास्थ्य फाइनेंस है, ठीक है। तो हमारे पहली बार तो डैड ने मना कर दिया था कि भाई स्टैनफोर्ड नहीं जाना है, ठीक है। अब एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा, 53 लाख रुपीज, ठीक है, और वो सब तो छोड़ो, चलो वो सब तो जुटा दिया जाए जैसे तैसे, टिकट का खर्चा वो भी ज्यादा होता है, उसके बाद फिर वहां पे रहने का मेनी थिंग्स आर देयर, राइट, सो फैमिली डिनाइड, वी गॉट अ लोन। तो स्वास्थ्य फाइनेंस इज अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी, ठीक है, तो वी गॉट अ लोन, ठीक है, और हमने घर का एक पोर्शन गिरवी रखा, ठीक है। बोइंग में जॉब करने के बावजूद उस लोन को मैं नहीं चुका पाया था, ठीक है। तो 2 बार स्टे ऑर्डर आया, ठीक है, चलो 2 बार, तीसरी बार लेकिन के स्टे ऑर्डर वो जाने वाला था, ठीक है। सो देन आई स्टार्टेड फॉक्सहॉग, ठीक है, एंड समहाउ वी paid the loan. Okay, 3 months back, a media asked me that, how you got your house back from the bank. So simple answer was that I bought the bank. Yeah, right. Now, Swastik Finance is one of our subsidiary, and we have invested in it. We bought that. Yeah, So let's not. एक्सक्यूजेस कि बहुत सारे होते हैं, पता है कि कॉलेज आना है, उठ नहीं रहे हैं ना, गाड़ी नहीं आ रही है, ठंड लग रही है, कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, यू विल एंजॉय। ओके, एग्जांपल देता हूँ आपको, जब ठंड होती है ना, ठीक है, तो हम नहाते नहीं है, राइट, है ना, और जब नहाते हैं तो ठंड कम लगती है, ऐसा होता है ना, राइट। तो कम आउट फ्रॉम देयर, यू विल सी द चेंज। ओके, और अभी पता है आपके पास बहुत मौका है, मेनी याद है, आपके पास इन्वेस्टर्स हैं, इनसे पूछो, इनके जमाने में, आप बूढ़े तो सन नहीं हुए हो, आप अपने जमाने की बात करो, अगर आप बिजनेस करने चाहते थे, है ना, ऑप्शंस नहीं थे, बैंक के पास जाओ, और पहले PSUs बैंक थे, ठीक है, जहां पे लंच ना हो फिर बोलते लंच चल रहा है, बाद में आइए, राइट, या राइट। पहली बात तो कि पता आपको पता है SBI की सबसे खासियत, लोन का नाम सुनते ही नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। SBI से पूछो क्रेडिट कार्ड, नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन मॉल में जाओ SBI का क्रेडिट कार्ड ले लो। देखो हम पता है उस कंट्री के निवासी हैं, लेकिन जहां पे पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, तो लिखा था है कि डोंट यूज मोबाइल फोन्स, राइट, और बगल में पेटीएम करो। दिस इज, तो वी आर लिविंग इन दैट कंट्री, राइट, जहां पे लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, एंड वी शुड यूटिलाइज दैट। ओके, अब आपके पास एक और चीजें होंगी, बहाने होंगे आपके पास, कॉलेज चल रहा है, कैसे करेंगे, हाँ, कॉलेजेस में बहुत सारे, पता है आजकल तो कॉलेजेस पता है, लेकिन वो कैसे स्कूल से भी खतरनाक हो गया है ना, या सीरियसली स्कूल में पता है बंक भी कर सकते हो, इन लोगों ने कैंपस इतने बड़े बना रखे हैं, ठीक है, क्या आप जा नहीं सकते बाहर, ठीक है, बट अगेन यू हैव टाइम, ठीक है। आप लोगों में से अगर किसी को DU का एक्सपीरियंस होगा, कभी आपके दोस्त होंगे या कोई होगा, लेकिन कि पता है उन लोगों को DU में जाने से पहले पता क्या लगता है, ऐसे आप इतने अच्छे फोटोग्राफ्स देखते हो, राइट, लगता है बहुत मजेदार लाइफ है ना। उसके बाद पता है कॉलेज मजेदार होता है, 4 MBPS की स्पीड आती थी पहले, इंटरनेट पे प्रॉक्सी लगा के लोग यूज करते थे, ठीक है, लाइफ मजेदार होती थी। उसके बाद पता है जो गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, अब DU की सबसे खासियत क्या है पता है, लेक्चरर 6,000 रुपए पे आते हैं पर डे के, आपको खरी खोटी सुना के चले जाते हैं, यार, ठीक है ना, और उसके बाद आपके लगते हैं बैग्स, आप एंजॉय करते हो उसको अच्छे से, आपके बैग्स लगते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है लेकिन कि कुछ टाइम का यूटिलाइज हमें करना चाहिए, ठीक है, वरना मैं भी 28 साल का हूँ, ठीक है, और मेरे दोस्त भी हैं, और वो मेरे से जॉब के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखवा रहे हैं, समझ रहे हो। तो वी शुड यूटिलाइज द टाइम बिकॉज टाइम इज रियली मनी। ओके, सो लेट्स नॉट सेव द मनी, save the time. That's really important for us. Okay. I think, should I start anything else? Guys, any questions? No? कहाँ से पढ़ी है? कहाँ से ये लिखा है आपने? ये सब रट क्या हो गया? Okay. बैठो।
required skills. Okay, depends upon कि देखो मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि do what you love, that's really important. ठीक है, मजा नहीं आ रहा कॉलेज में, छोड़ दो, मैं बता रहा हूँ सच्ची में, या ठीक है ना, नहीं मजा आ रहा है छोड़ दो, ठीक है, पोकरबाजी आती है कर लो, या ओके, सी दिस इज a day, ओके, जहाँ पे आजकल हमारे माँ बाप भी नहीं दबाव बनाते भाई डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है, आजकल तो नहीं हो रहा है, राइट। अब पहले जमाने में देखो ना कि मेरा तो छोड़ो, आपकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, या पहला 10th करना है आपको, ठीक है, और IIT हर हाल में क्रैक करनी है, जरूरी था, ठीक है, वरना समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, ठीक है। दूसरा उसके बाद 12th करनी है अच्छे से, उसके बाद जॉब्स की बारी आती थी, प्राइवेट जॉब का नामों निशान हम सुनते भी नहीं थे, क्या था, SSC, बैंकिंग, रेलवे, UPSC और स्टेट के जितने भी जॉब्स थे, गवर्नमेंट जॉब्स, अभी भी लगता है लोगों को कि गवर्नमेंट जॉब में जन्नत है, राइट, लगता है, मतलब सीरियसली पेंशन हटने के बावजूद, पेंशन नहीं मिल रहा ना आजकल, EPF दे रहे हैं, राइट, उसके बावजूद कैसे आपको जन्नत है ये बताओ ना मेरे को। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब से अच्छा है अच्छी कंपनी में जॉब कर लो, ठीक है, लाइफस्टाइल सुधर जाती है ना, मतलब गवर्नमेंट जॉब वाले को देखो, आप लोग तो नहीं हो ना, बैंक में 5 करोड़ रुपए, ठीक है, और चप्पलें फटी हुई, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि पैसे जो है ना उनके पास, उनकी नेटवर्क बहुत अच्छी है, लेकिन बैंक में पैसे जमा होने से नेटवर्क सच में नहीं बढ़ती है, ठीक है, मनी शुड बी रोल्ड आउट, ओके। तो टॉकिंग अबाउट स्किल्स, ओके, आज के जमाने में 2 चीजें, आपको बेचना आना चाहिए, दूसरा बनाना आना चाहिए, आपको लोगों को बनाना बहुत जरूरी होता है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स नाउअडेज टू सर्वाइव, प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है, maybe शायद my language would be a bit harsh, but this is the practical, okay। जब तक, अब इसको दूसरे वर्ड में लेते हैं, that you need to know how to convince people, okay। आज के जमाने में अगर किसी की जेब से अगर आपने 5 रुपए निकलवा लिए ना, उसके खुद के हाथ से, ठीक है, अपने हाथों से नहीं, या ठीक है, तो that's the biggest skill nowadays, okay। You should know how to sell out। देखो अभी आप कॉलेज में हो, ठीक है, कल को क्या करोगे अभी बताओ, एक जॉब तो करोगे आप, ठीक है, और आपको पता है जॉब कुछ भी हो, आप HR मैनेजर हो तो ये मत समझो कि आप HR में हो, आप सेल्स में होगे, आप HR में हो तो भी आपको कुछ ना कुछ आपको सेल आउट करना होता है कंपनीज में, ठीक है, आप PR में हो तो भी आपको सेल आउट करना है, इनडायरेक्टली कुछ करना होता है आपको। अब जैसे PR में हो, आप सेल आउट कैसे नहीं करोगे, तो आपको लगता है नहीं भाई मैं PR मीडिया मैनेज कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहा हूँ, नहीं, आपको सोशल मीडिया पे वही पोस्ट डालने के लिए बोला जाता है जिससे कि सेल्स उसकी आए, कंपनीज की सेल्स आए, यू आर सेलिंग थिंग्स, राइट। HR, आपको कैसे पता, हाउ कैन यू से कि भाई HR का, लोग समझते हैं HR का काम पता है क्या होता है कि I'll get back to you later, right? Yeah, but not something like that, okay। HR is the hardcore sales person because you are the responsible person, ठीक है, जिसकी PF कटेगी तो आपके सर पे आएगा, अगर किसी एम्प्लॉय की PF कटती है, मेरे इतना क्यों कट गया, राइट, आपने 2 दिन की सैलरी काट ली, इतना क्यों बढ़ गया, राइट, बिकॉज एक्चुअली दे आर वर्किंग फॉर यू, दे आर नॉट नोइंग द कंपनीज ऑनर और समवेयर एल्स, राइट, यू आर हायरिंग देम फॉर दैट, ओके। आजकल HR के पास भी टारगेट है, राइट, भाई 10 हायरिंग करो आपको इंसेंटिव मिलेंगे, है ना, व्हाई नॉट सेलिंग, राइट। सो कन्विंस हाउ टू कन्विंस अ पीपल, पर्सन, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, ओके। अच्छा एक चीज और, एक ना ट्रेंड चला है कि इंग्लिश आनी चाहिए, है ना, कि भाई सेल्स करना हो या फिर कहीं अच्छी जानी, कुछ ना इंग्लिश आनी चाहिए, राइट, क्यों, मैं ये पूछता हूँ क्यों, ठीक है, सी इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ओके, दैट्स नॉट द स्टेटस सिंबल, ओके, व्हाट पीपल आर मेकिंग, ओके, जैसे कि आपके पास गर्लफ्रेंड होनी चाहिए तो दैट्स अ स्टेटस सिंबल, तो दैट्स नॉट द स्टेटस सिंबल, ओके। you should have प्रॉपर कंटेंट एक्चुअली, ठीक है, आप चाहे किसी भी तरीके से आप होंगे हो, दैट्स फाइन, ओके, आप उसको एक्सप्रेस तो करो, व्हाट द कंटेंट यू हैव, द क्वालिटी ऑफ कंटेंट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके। एंड दिस इज हाउ कि आजकल जो है सो आपसे ज्यादा यूट्यूबर्स कम हो रहे हैं, राइट, एंड इवन आपने भी सुना है, मैंने सुना है आपने एक चैनल खोला है, राइट, या
I was, I guess, yeah, you read it, right? Okay. I'll tell you, Mr. Dhar, like, कि you can open a new university, okay, with earning from YouTube, right? Technical growth ही सुना होगा आप लोगों ने, है ना? 4 लाख का फोन लेके घूम रहे हैं, करेक्ट? और भी बहुत सारी चीजें हैं from YouTube, करेक्ट? Many are there. अब तो लोगों ने पता है जॉब छोड़कर YouTube और Instagram पे कर रहे हैं reels, right? So what is that? That's the content. See the power of content. Okay, so you should have content and you should have like capabilities to present that to convince to the people. That's something. Okay, बाकी तो सब बस जी रहे हैं. Yeah, seriously, सब तो बस हार्ट अटैक का वेट कर रहे हैं. Yeah. Next, anything else, guys? Anyone? Sir, is it true that angel investors actually help in scaling a business after investing in it? नीचे से देखो क्या पढ़ा था आपने, नोट में क्या लिखा था, क्या कह रहे हो? अरे क्या कह रहे हो? I'm not able to understand. मैं ये कह रहा हूँ कि सर एंजल इन्वेस्टर्स एक स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करने के बाद उसकी स्केलिंग पे हेल्प करते हैं. Of course, I'll tell you. You know, angel that means कि आप just not the angel. पता है एक तो इसने वर्ड लगा है angel. You know ऐसे like कि कोई ऐसे सपने में आएगा and then like आपकी बहुत सारी चीजें हेल्प करेगा, ठीक है? So like let's call it as an individual investor, not the angel investor, ठीक है? अब there are different kind of angel investors, ठीक है? एक एंजल इन्वेस्टर जिसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब होता है, ठीक है, तो सिर्फ आपको पैसा देगा और हर एक क्वार्टर आपके ऑफिस में आएगा रिजल्ट देखने के लिए कि तुम्हारा बैलेंस शीट कितना है, ठीक है? कोई एक टाइप के होते हैं. दूसरे होते हैं मेंटोर्स टाइप के, अब इस टाइप के होते हैं कौन से? देखो इंडिया में पैसा किस किस के पास है आपको पता है? बिल्डर्स, क्रिकेटर्स, पॉलिटिशियंस, राइट? इन सब के पास पैसा है, राइट? मैक्सिमम पैसा इन लोगों के पास है. वैसे हम लोग तो बस टाइम पास कर रहे हैं सीरियसली. तो लेकिन अब इन लोगों से पैसा लेना पता है बहुत खतरनाक होता है, ठीक है? डू यू नो व्हाट? वी नेवर एंटरटेन इंडियन इन्वेस्टर्स इन द कंपनी. ओके, रीजन बिहाइंड इज दैट अगर किसी से मैंने $1 मिलियन इंडिया में ले लिया, ठीक है, पैसा लिया, दे दिया बंदे, अब हर एक हफ्ते या 2 दिन बाद उस बंदे का फोन आएगा शाम को, और तरुण कैसे हो, कैसा चल रहा है, ठीक है? एक्चुअली ही इज नॉट आस्किंग कि कैसे हो, वो ये सोच रहा है, वो उसका कहना है कि तरुण तुम भागे तो नहीं. या okay, so this is the mentality for Indian investors, right? See, बाहर के investors, right? I said $5 million, एक मेल आएगा, पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, ठीक है? दूसरा मेल हमारी तरफ से जाएगा, कंफर्मेशन ऑफ द अमाउंट एंड सिंपली सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, कि हमने आपको उसके अगेंस्ट इतना शेयर दिया है, ठीक है? उसके बाद बंदा कोई मतलब नहीं है उसको, एग्जिट का टाइम आएगा, सिंपल हम उसको एग्जिट का जो भी पैसा हम उसको भेज देंगे, ठीक है? So like and talking about the good angel, see like it is really important that like connect with a good angel investor. Okay, not like money makers actually. Okay, because पैसा लेने के बाद अगर पैसा डूबा उसका, ठीक है, तो आपके ऊपर बड़ी आफत आएगी. या सीरियसली, ठीक है, घर पे गुंडे भी भेजे जाएंगे. या सीरियसली हो रहा है, ठीक है? तो like find out a good angel investor who are actually interested to invest upon your dream, not into the business. Okay, he can understand your passion. Okay, what exactly you're looking to do. Okay, पता है like investors that means कि वो आपकी कंपनी के पार्टनर्स बन रहे हैं, करेक्ट? तो पार्टनर्स बनने का मतलब ये है कि एटलीस्ट यू बोथ शुड बी ऑन अ सेम पेज, राइट? अगर आप दोनों को उस कंपनी के विजन के बारे में पता हो तभी उसको पार्टनर बनाइए आप, राइट? तो ऑफ कोर्स अगर एंजल इन्वेस्टर सच में एंजल होते हैं, ठीक है, अगर इफ यू आर गेटिंग अ ग्रेट एंजल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट अपॉन योर ड्रीम, राइट? और एल्स डोंट गो फॉर एंजल इन्वेस्टर्स, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, राइट? देखो क्योंकि पैसा उसका खुद का होता है, ठीक है, डूबेगी तो आपकी लंका लगेगी, बता रहा हूं, या ठीक है? तो डोंट गो फॉर एंजल इन्वेस्टर्स, जस्ट रीच आउट टू द वीसीज, वेंचर कैपिटलिस्ट, ओके? बिकॉज पैसा सारे बाहर के इन्वेस्टर्स का होता है, आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं आएगा. देख रहे हो आप अभी इंडिया के हालात, लेकिन सारे जितने भी कंपनीज है सारे पैसे बर्न कर रही हैं, ठीक है, और पैसे सारे बाहर के हैं. अगर इंडियन होती तो आपको पता क्या होता है? ऑफिस की खिड़कियां और विंडोज टूट रहे होते अभी. या दिस विल हैपन, राइट? सो गो फॉर एनीवन गो फॉर ग्रेट एंजल इन्वेस्टर्स. अप्रोच टू रतन टाटा. He is I tell you, he is very responsive on LinkedIn. Okay, if you have any idea, you can approach to us, of course, I'm not denying that, right? Reach out to Ratan Tata, okay, and reach out to Kiran Bedi.
she is an IPS, but she is now has started investing. Okay, reach out to these two through LinkedIn. They are very responsive, they'll respond you instantly. Even like, on via email too they respond. Okay, so you should go with the people who are actually great and better, even being a human being too. Because angel intelligence, you should see the humanity first of all. बंदा कैसा है, person कैसा है, right? उसकी histories कैसी रही है, right? किस कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया है और कितने लॉस में गए, ये देखो पहले. और उसके साथ हुआ क्या है. प्रॉफिट वाले को मत देखो, ठीक है. जिसके लॉस हुए हैं उसके साथ क्या हुआ है, ठीक है. Do the case history. You'll find a good knowledge and go for that. I think you have an idea, right? Oh, great. Anything else, guys? No? Yeah, are you planning to ask something? No? Yeah. Anyone else, guys? No? Alright, so thank you very much, everyone. Yeah, so thank you very much, Mr. Dhar, okay, for inviting me, and of course, I would love to see you guys, if you guys are having any ideas, okay, come pitch to us, okay, we'll entertain, okay, do write JIMS because we are getting many applications from the people, right, okay, and come up with good ideas, okay, don't create a website on WordPress and come to us for 5 minutes, please. That's really, irritate us, फिर पता है लोग स्टार्टअप्स वाले से विश्वास उठ जाता है, पता है कि चलो ये भी ऐसा ही होगा, एंड डू वेल इन योर लाइफ. नहीं चल रहा है कॉलेज छोड़ दो, ठीक है. That's cool. And thank you very much, everyone. Good day. About to say to give them a big thanks, you already given them a Thank you, sir, for your words of wisdom. Now, I would like to invite our dignitaries to come on stage and facilitate our guests. Sorry guys for 5 minutes. Yeah. Okay. First of all, thank you very much to you. Okay. And thank you very much you guys. You have been a very good host. Okay. And a great thanks. कि मुझे पता है उसका नंबर देना कि जिन्होंने ये छपाया एक्चुअली. Because मेरी कंपनी से इतने शॉर्ट नोटिस पे ये नहीं छपते हैं, ठीक है. So great thanks to all of you, right, and everyone कि जो बैठ नहीं रहे हैं. Yeah. Thank you very much, everyone, and see you guys again. Yeah. Any question? पता है मुझे तुमसे सच में डर लगने लगा, पता नहीं क्या पूछोगे. But great, and if you have any idea, I believe that, then just come to us. We'll definitely entertain. Yeah. Thank you very much. Yeah, everyone. Now we have amongst us Dr. Meenakshi Narula, Head of Department of Information and Technology and also the IIC convener. Dr. Narula is having around 20 years of experience in the IT industry and academics. She is heading the IT department of JIMS for last 14 years. She is the program coordinator of BCA program of Guru Gobind Singh Indraprastha University and has been instrumental in the revision of the syllabus of BCA coordinating with 20 affiliated colleges of the University of BCA program. She has also been involved in developing software for the banking, housing, finance and education sectors. She has published and presented research papers in the area of soft computing, artificial intelligence and expert systems in various conferences and journals. We welcome you, ma'am, and would request you to please say a few words to all our attendees and also propose the vote of thanks for our distinguished guests. Good afternoon, everyone. This is my privilege to propose the vote of thanks for this wonderful session
which was organized by IIC. And it is really a very helpful session for our students, that they will come to know about the opportunities they can have for launching their startups. Because till now we all were focusing that how are the placements, कौन सी अच्छी कंपनीज आ रही हैं, कितना पैकेज ऑफर कर रही हैं. तो always our students were becoming job seekers. So now we are, after the installation of this IIC in 2018 in our campus, which was an initiative of Ministry of HRD then, now it is Ministry of Education, that they wanted to promote this innovation and startup culture in the colleges, and they found that higher educational institutes are the best place where they can get the young minds to work for these things, these ideas, and they can come up with some very good startups. And yes, we are also trying to inculcate this culture in our students, that they should also come up with some ideas. We are conducting many activities in IIC, like inviting the distinguished leaders or the successful people like you, and to address our students so that they can get motivated and they get some inspiration from these leaders, so that they can also think of coming up with something of their own. So this was a very wonderful session. I would like to thank Mr. Poddar for having very interactive, very interesting session, and it definitely is going to motivate our students. And we are very thankful for, sir, your offer that you would like to just invest in the ideas of our students. It will be a very good opportunity for our students to come up with some good ideas for their startups. So I think you all have been getting this good information about this kind of opportunities you are having in our college. So I think you are not knowing, and this is a very good platform you have got to know about this kind of association. And I would like to thank Mr. Arun also, that because of him we were able to conduct this wonderful session at a very such short notice. And I would like to thank our director, sir, who is always motivating, you can say, guide for us. He, under his able leadership, we are able to achieve. And recently, you all might be knowing, we have achieved A+ grade in NAC also. So thank you very much, sir, for being our inspiration. And a big thank you to IIC for conducting this event at such a short notice, and especially to Anisha. She has done a wonderful job at a short notice, like sir was saying, getting that printed also. And all the faculty members who are the part of IIC and were in the organizing committee of this event, and all the student members of IIC who have helped us in organizing this event, and all the students who are here as an audience. And I think you had a wonderful session this time, and you had been a very good audience, and you have made this session very interactive. Thank you all. Thank you very much. Thank you, ma'am. With this, we come to the end of the event. Thank you all for attending this lecture. Thank you.